So today we have to continue on the topic, remaining topic of the defense technology. Okay. So we have already discussed about the missiles, about the missile system. We have already discussed, and we have discussed already types of the submarines. Okay. And in the submarines, we find that there is actually three types of the submarines. The first is the diesel submarine and the diesel electric submarine, and second one is the nuclear powered submarine. Okay. And the one specific type of the submarine is the scorpion submarine. Fine. So scorpion submarine, scorpion submarine. Clear? Actually, scorpion submarine is just nothing. This is the more advanced, you can say, highly advanced diesel submarine. Okay, diesel submarine, and with what? With air independent propulsion technology. Okay, which is known as the AIP technology. Okay, AIP, that means air independent propulsion system. You can say the air independent propulsion system. That means कि as the nuclear submarine हमने ये देखा, nuclear submarine is also what? Is also having the AIP technology. Okay, air independent technology. That means a nuclear powered submarine can you can say sustain at the beneath of the surface of the water for the much longer time. Okay, comparatively. That means comparatively diesel submarine. But in case of the scorpion submarine, this AIP technology is also having the scorpion type of submarine. Okay, and scorpion submarines का हमने वहाँ पे हमने देखा था what are the examples of the scorpion submarines, जिसमें हमने INS वेगा, INS वगीर, INS वॉक्शीर. Okay, so INS Vela. Okay, so these are the kind of what? These are the kind of the scorpion types of the submarine. Clear? And after that we have already discussed some submarines, and then completing submarines we discussed about the AWACS, right? What is AWACS? That means the AWACS system. AWACS system is the airborne warning and control system. Okay, and AEWS are airborne early warning control system. Okay, so we have already discussed, in which we have discussed about the Falcon. Falcon is a Israel technology. Okay, and this is also a AWACS system. Fine. And after that we have discussed our indigenous AWACS system, which is known as the Netra. Okay, so we have discussed about the Netra. Netra is also a type of the AW and CS system. Okay, AWACS systems. Fine. And Netra is actually developed by the DRDO. Clear? Okay. So today we have to discuss some our recent developments regarding the defense and technology. Okay, after completing the submarine, when we talk about the some aircraft, and after some helicopters also. Okay, aircraft are actually आप कह सकते हो कि they are बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी, मल्टी यूटिलिटी क्या होते हैं, एक तरीके के डिफेंस व्हीकल्स होते हैं एयरक्राफ्ट. ओके, and we know that in our surgical strike 2.0, which is 2.0, which is conducted by our India. कहाँ पे हुआ था वो आपके उधर उरी वाले केस के बाद. ओके, so that was a air strike. ओके, वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया गया था. तो आप समझ सकते हो कि हमारे लिए कितना ज़्यादा टैक्टिकली कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्या जो भी एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते हैं. फाइन. So if you are just talking about the some aircraft, okay, some actually combat aircraft. Okay, so combat aircraft, that means the aircraft which are used in the war. Okay, in the combat. Combat means kya? The combat means war. Okay, so in the combat aircraft, we have different types of aircraft like the MiG-27. Okay, oftenly you have मतलब heard in the news. Okay, Mirage. Okay,
And now today we are talking about the Tejas, and one more important, this is the Rafale. Okay, Tejas and Rafale. Tejas, Tejas are considered as the LCA. LCA is what? This is the LCA. LCA is what? This is the light combat aircraft. Okay, and this LCA is indigenous developed. और कल न्यूज़ में भी एक चीज़ था, अगर आप लोगों ने देखा, कल कल के न्यूज़पेपर में द हिंदू में भी एक चीज़ था कि LCA is actually developing by the DRDO, and by the end of the 2022 the DRDO will provide to the Indian Army the 5 units of the LCA Tejas. Okay, Tejas की बात की जा रही है यहाँ पे, LCA Tejas by the ending of 2022 क्या हो जाएगा, 5 units, okay, will be provided by the DRDO. Okay, so this is the Tejas. And Rafale का हमारा डील तो हुआ है, आपको पता है. दिस इज मोर क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा विवाद में रहा ये डील, है ना. एंड रिसेंट गवर्नमेंट, अवर दो एनडीए गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड द डील ऑफ द Rafale फ्रॉम द फ्रांस. ओके, चलो तो एक एक करके हम यहाँ पे ऐसे बात करेंगे, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट आवर इंडिजिनस डेवलप्ड द LCA Tejas. ओके, एक्चुअली द LCA Tejas LCA Tejas, clear. Okay, LCA Tejas is a 4th generation, ठीक है, and fly by wire, single, and the single seat single engine. Okay, actually this is the indigenous developed, okay, developed 4th generation, okay, single seated, that means at a time only one pilot is allowed, single seated, single engine. It is but obvious that if it is having a double engine, so it will get the more heavier. Okay, that means कि अगर डबल इंजन का यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, तो वी विल नॉट कंसिडर अंडर द LCA. So we have to develop the LCA light combat aircraft. So this is the single engine aircraft. Okay, indigenously developed, and the 4th generation, single seat, that means only one pilot is allowed. Okay, and this is actually fly by the wire supersonic speed. Okay, that means the speed of LCA Tejas is very much high. Okay, supersonic speed, that means कितना होगा, अगर आप लोगों को याद हो, just comment below what is the supersonic speed. Yeah, you can also we can consider that which speed, or you can say which speed of sound we can consider as a supersonic speed. Okay, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करो इसको कि किस स्पीड को बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड. क्लियर. And this is LCA, which is actually inducted in the Air Force in 2016 and commenced the formal operations in the 2018. Air Force में इसको कमीशन किया गया. This is commissioned in Air Force in 2016. Okay, and after the many tests, okay, many combat tests, this is actually in the year of 2018 in operational mode. Okay, in operational mode, that means कि from the 2018 the actually LCA Tejas is providing the services to the Indian Air Force. Clear. Okay, actually the DRDOs developed by DRDO's aeronautical department. Okay, that means the aeronautical department of the DRDO is actually developing the LCA Tejas. ठीक है, तो LCA Tejas, and this is the actually multi
functional role. Okay, this is the multi-functional role. Okay, that means the most यूटिलाइज जो यूटिलिटी है इसकी बहुत ज़्यादा है, किसकी, तेजस की. ओके, एंड इट कैन ऑल्सो परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द सेवरल व्हाट इन द सेवरल वेदर, इन ऑल वेदर एयरक्राफ्ट. ओके, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो वेरी सुटेबल फॉर द ऑल वेदर कंडीशन. दैट मीन्स अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म के चांसेस हैं, तो इन दैट केस इट इज़ वेरी मच यूटिलाइज यूटिलिटी. ओके, ठीक है, तो ये इन सब में क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है. फाइन. ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली इंडिजिनस. सो आप समझ सकते हो कि तेजस इज इंडिजिनस डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ओके, नाउ इसके जो वर्जन है, अभी इंडियन एयर फोर्स जो है उसको फ्रॉम द 2018 द इंडियन एयर फोर्स इज एक्चुअली यूजिंग द LCA तेजस. फाइन. नाउ द नेवल वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, एंड नेवल वर्जन ऑफ द तेजस इज नोन एज द LCA नेवी. Okay, this is the LCA Navy. This is the naval version of the Mk1 Tejas. Naval version of Mk1 Tejas. Okay, अगर इसका पूरा नाम की बात करें ना, तो इट विल कंसिडर द जैसे LCA तेजस Mk1. Okay, this is the complete name, or you can say this is the full name of the Tejas. Clear? So the naval version is also indigenously developed. This is also indigenously developed. Clear? Okay. In the year of, यहाँ पे कुछ information है. In the year of January 2022, January not sorry, in the year of January 2020, the first landing first landing of Tejas at INS Vikramaditya. INS Vikramaditya. Okay, what is INS Vikramaditya क्या है? This is actually INS Vikramaditya is a aircraft carrier warship. Okay, that means Vikramaditya क्या है? This one is a aircraft carrier warship. It can carry the aircraft. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि what are the actually area of the INS Vikramaditya. The developments of the this type of the ships or warships actually enhancing the power of the armed forces of the India. Okay, and INS Vikramaditya, this is a naval warship, so it increases the power of Indian Navy. Okay. Acha class, one more thing is here which you must have to very you have to must pay your attention on that. जब भी कभी ऐसे डेवलपमेंट्स की बात करेंगे हम, ठीक है, स्पेशली द सम एयरक्राफ्ट, यू कैन से द सम टेक्नोलॉजीज and some another development, particular, or you can say the specifically in the case of the defense technology. So you must have to remember that if the technology is owned by the foreign country, so which country, okay, so which country is actually providing the technology, which country is providing the armed vehicles armaments to the इंडिया. और अगर कोई वहाँ पे जॉइंट वेंचर होता है इन बिटवीन इंडिया एंड द अनदर कंट्री, तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट. ओके, क्योंकि दिस इज डिफेंस टेक्नोलॉजी. ओके, एंड इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस
are arises from the defense technology in your preliminary test in PT. ओके, तो पीटी के लिए दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ कि कौन कहाँ से क्या टेक्नोलॉजी ली गई है. ओके, और टेक्नोलॉजी कौन कहाँ से ली गई है? इट इज़ नॉट ओनली फॉर द डिफेंस टेक्नोलॉजी. व्हेन यू आर जस्ट reading or when you are just learning about the some another technologies, including the space technology, okay, IT, okay, and defense technology and nuclear technology. Okay, so these things you have to just pay your attentions. Okay, उस पर हम बात आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने बात किया था क्रायोजेनिक इंजन. ओके, तो क्रायोजेनिक इंजन इज अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम, कहाँ की टेक्नोलॉजी थी क्रायोजेनिक इंजन? रशियन टेक्नोलॉजी. ठीक है, नाउ वी विल discuss about the what LCA Navy. Yes, LCA Navy successful landing will now pave the way to the develop and manufacture the twin engine deck based fighter for the Indian Navy. Actually, by the landing successful landing of the Indian Navy version of the Tejas on the INS Vikramaditya, actually it is providing the way for what कि इसमें ये बोला गया कि now we will just consider to develop the double engine or you can say the twin engine. Okay, twin engine Tejas. ठीक है, for the Indian Navy. Okay, okay, Kaveri engine is nothing which is it is a technological complex and the vital system for the LCA as well as the future variants. That means जैसे यहाँ पे हमने बात किया MK1. Okay, so MK1 is actually engine which is using in the Tejas, and which engine is using the Kaveri engine is used in the Tejas. Clear? So just remind that which engine is using in the Tejas. Clear? So okay, now we will discuss about the helicopters. ठीक, helicopters are what? आपको पता है क्या होते हैं हेलीकॉप्टर्स? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एंड व्हाट इज चॉपर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चॉपर एंड द हेलीकॉप्टर? क्या डिफरेंस होता है? आपने सुना होगा ना, चॉपर से जा रहे थे, राइट? देयर इज अ चॉपर सर, हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर is the advanced version of the chopper. Okay, advanced in many cases, advanced in the in case of the engines using in the helicopter, or you can say the advance in the flight at the higher altitude than the choppers. Okay, and after that the helicopters are also considered as the this is the armed chopper, armed chopper. Okay, that means कि जब chopper में क्या हो, armaments. Okay, there is a what, there is a installment of the installation or of the what, the several types of the armament. Okay, so the chopper become the helicopter. Okay, chopper become the helicopter. ठीक है. So the chopper are here like the HAL. Excellent. Actually, the choppers or most of the unmanned air vehicles also like the drones. Okay, and the some aircraft, some parts of the aircraft. Okay, actually developed by our company, which is a public sector company, government company, known as the HAL. Okay, this is the Hindustan Aeronautics Limited. Hindustan Aeronautics
Limited. This is the HAL. Okay. Actually, HAL is providing the aids and the help to the DRDO for the development of the aircraft, parts of the aircraft, and the helicopters. Apart from helicopters, so many uh, unmanned air vehicles, so many आप कह सकते हो कि drones are also developed by the HAL, which is known as the Hindustan Aeronautics Limited. Okay, so HAL LCH. This is the Hindustan Aeronautics Limited developed LCH. This is the light combat helicopter. Okay, and LCH was proposed to meet the Indian Air Force requirement of dedicated light helicopter for the combat operation. Okay, for the purpose of the combat operation. What is the purpose? Combat operation. Okay, operations including combat operations including बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ आर्मामेंट सप्लाई करना हो, कहीं पहुंचाना हो, ठीक है, आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कराना हो, एंड उसके अलावा द लॉन्चिंग ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द स्मॉल क्रूज मिसाइल्स ऑल्सो, ठीक है, और उस बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती है लाइक LMGs एंड आल्सो यूजिंग बाय द स्नूपर्स ऑन द हेलीकॉप्टर. ओके, ठीक है, चलो. LCH with a narrow, okay, fuselage as pilot and co-pilot, gunner in the tandem configuration, incorporating a number of stealth features, armor propulsion, night attack capability, ठीक है, like armor armor protection, not propulsion, armor protection, okay, night combating, clear, night combating, and crash worthy landing gear for better survivability. Crash landing, crash landing, crash worthy, crash worthy landing, crash worthy landing gear for better survivability. Gear for better survivability. Okay. That means the some of the technologies, okay, you can say the features are installed in the HAL light combat helicopter, and the features are like armor protection. That means armor protection. That means if someone is launching the any missiles to destroy the helicopter, so helicopter have the capability to escape out from there. Why? Due to the installation of some types of the radar system, some types of the वाक्स एंड वेक सिस्टम. ओके, अभी हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स क्या होते हैं इसमें, ठीक है. नाइट कॉम्बैटिंग, दैट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ द कॉम्बैटिंग एट द नाइट टाइम. ओके, नाइट में भी क्या कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी इनबिल्ट हो. फाइन. एंड द क्रैश फॉर द लैंडिंग गियर फॉर द बेटर सर्वाइबिलिटी. दैट मीन्स कि देयर इज अ वेन एवर द हेलीकॉप्टर गेट क्रैश, ओके, तो landing is landing is more sophisticated and the protective. Why? For the better survivability. Okay, जिससे जो passengers हो, you can say the pilot हो, gunners हो, they can survive. Fine. Okay, so here is the first LCS of the India. This is the known as the what, HAL Dhruv. HAL Dhruv. Okay, ध्रुव क्या है, विजय स्टार. ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मैथोलॉजी, ध्रुव इज एट बहुत ही सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, एक स्टार है. क्लियर. तो HAL ध्रुव इज अ
Helicopter. Helicopter. So it is a helicopter developed and manufactured by the India's Hindustan Aeronautics Limited. Okay, and entered service in 2002. Entered in service in 2002. Okay, that means from 2002 till now, the LCH through is providing the service. Okay, and this is useful for both both military and military and civilian operations. Okay, that means military operations like suppose that in the war, okay, yeah, supply of armaments, clear, supply of armaments or supply of coup, okay, supply of coup, ठीक है, that means कि the defense personnel उनको भी क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है. Okay, and the for the civilian operations like जैसे helicopter safari fine, and in the transportation and the rescue operations, especially during the what, during the flood. Okay, और क्या कर सकते हो, earthquake. Okay. You can say the building collisions. Okay, so these are the what, these are the civilian ठीक है, including civilian operations include, fine, and this is the military operation like the supply of the armaments, supply of the coup. Okay, apart from this it is also used in the war. ठीक है, कैसे, जैसे कि gunner is at the what, on the helicopter, and just by the using of the LMG he can fire. Okay, the enemies. Okay, ठीक है, ये चीज क्या है, these are the what, these are the basic use of the helicopter through, fine. Military variant being developed for Indian Armed Force. Actually, the military variant of the HAL Dhruv is using by the by the Indian Armed Force. Indian Armed Force. That means Army, Air Force, and Navy. Okay, that means all versions are available. HAL Dhruv. ठीक है, all versions are available. So role of the Dhruv, this is for the passenger or commuter role, VIP traveling, ठीक है, and the casualty evacuation, rapid deployment of force, that means कि rapid deployment जैसे force को पहुंचाना, ठीक है, consider the word, consider the rapid deployment, ठीक है. So here the role में like what, जैसे इनके functions like VIP travel, VIP travel, और पैसेंजर और कम्यूटर रोल, पैसेंजर कम्यूटर रोल, क्लियर. रैपिड force deployment, that means the some of the geographical terrain,
आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे फोर्सेस का पहुंचना क्या होता है, इजी नहीं होता है। ओके, फाइन। So in this case, the LCA is using, and the logistic air support also. Another role is logistic air support. Where? And then search and rescue, search and rescue, training, etc. Training, etc. So these are the role of the light combat heli. Clear? Okay. So the next one is the AH-64 Apache. Okay. LCA Dhruv is a indigenously developed helicopter. Okay. Now we have the another helicopter, and this helicopter is considered as the what? Considered the most advanced multi-role helicopter. This is known as the AH-64 Apache. Okay. Apache. The multi-role combat helicopter Apache is among the most advanced multi-role. This one is the most advanced multi-role heavy attack helicopter. Heavy attack helicopter. That means this one is not considered the light combat helicopter. This is the heavy attack helicopter in the world. Actually, most advanced in the world, worldwide. ठीक है, कौन सा? AH-64 Apache. It is a capable to delivering a variety of weapons, which include air to ground Hellfire missile, okay, 70 Hydra rocket, and air to air Stinger missile. That means capable of variety of weapons. It can launch, or you can say fire variety of weapons. Variety of weapons. That means the weapons including like air to ground Hellfire missile, air to ground Hellfire missile. That means a missile which can fire from the helicopter. Hellfire is nothing. This is the helicopter fire missile, and from the air to ground. This is the ground, not ground. Okay, from air to ground. Clear? Okay. Uh, some like the 70 Hydra rocket, air to air Stinger missile. Okay, Stinger missile can also Stinger missile can launch. ठीक है, and Stinger missile कैसी missiles which is using to destroy the ships. Okay, frigates. ठीक है, उन सबको किस क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए the Stinger missile is using. Clear? Okay. Also carry a 30 chain gun with 1200 rounds, fire control radar 360 degree coverage. ठीक है, that means कि कितने, this it is also equipped with the what, 30 chain gun, 30 chain gun. Okay, that is the machine gun. Clear? मशीन गन देखा आपने, मशीन गन को यूज कर सकते हैं उस पर बैठ कर. फाइन. एंड इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद द फायर कंट्रोल रडार 36 डिग्री कवरेज. 36 नहीं, 360, सॉरी, 360 डिग्री coverage. That means a radar system is also radar system is also here, which is actually 360 degree coverage. ठीक है, it will provide the 360
डिग्री कवरेज, किसी भी तरीके का अगर कोई थ्रेट अगर उसकी तरफ बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग सम मिसाइल्स और यू कैन से सम अनदर एयरबोर्न, what एयरबोर्न थ्रेट, ठीक है, इन दैट केस दिस radar system is providing the information regarding that threat. Okay. Fine. Next, there is the nose mounted sensor suited for target acquisition and the height height vision सॉरी नाइट विजन सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, कहाँ पे, एट द टॉप, एट द अपेक्स, यू कैन से एट द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द वर्ड, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हेलीकॉप्टर, ठीक है। नोज माउंटेड बोला जाता है उनको। जो हेलीकॉप्टर का ये वाला पार्ट होता है, सपोज कि जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का जो नोज पार्ट होता है, दिस इज द वर्ड नोज माउंटेड। तो यहीं पे क्या लगा होगा, उसमें हेलीकॉप्टर में ऐसा सेंसर्स लगे होते हैं, द सेंसर्स आर प्लेस्ड, ओके, ओके, एंड दिस सेंसर्स इज प्रोवाइडिंग द what, providing the information, ठीक है, it providing the information regarding the what, regarding the target acquisition, that means कि at which degree, at that which distance the target is there, और उसको हिट करने में हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट also using for the night night vision system, ओके, नाइट विजन, ठीक है, नाइट विजन की आगे क्लियर रहे रात में भी कि क्या चीज़ आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। एंड इट्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, इट इज़ डे नाइट एंड ऑल वेदर कैपेबल एंड हैज़ हाई एजिलिटी एंड द सर्वाइबिलिटी अगेंस्ट द बैटल डैमेज। दैट मीन्स कि बहुत सारे मल्टी फंक्शंस इसके रोल हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हैवी हाई है, फाइन, एंड इट इज ऑल्सो कैपेबल टू टू ऑल वेदर, ओके, ऑल वेदर्स कैपेबिलिटी इज ऑल्सो हैविंग, ठीक है, इन द अपाचे AH-64, ठीक है। So these are the what? These are the basic information regarding the Apache AH-64. The next one is the CH-47, CH-47 F bracket 1 Chinook Chinook helicopter, Chinook clear। एक्चुअली चिनूक हेलीकॉप्टर आप सब लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा। इसमें ऐसे होते हैं कि दीज आर द एक्चुअली हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, दे आर कंसिडर एज द हैवी लिफ्ट helicopter, okay, heavy lift, that means they have the capability to lift the heavy to heavier, okay, बहुत सारी heavy और heavier क्या होते हैं, मतलब जो सामान होते हैं वो गुड्स होते हैं, उनको कैरी करके ले जा सकते हैं। इवन दे हैव कैपेबिलिटी टू कैरी द टैंक एंड द टैंक एंड द आर्टिलरीज, ठीक है, तो आर्टिलरी और टैंक को भी क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, एयर लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। And with a vertical lift platform, it is capable of airlift services in both combat and the humanitarian mission, okay, combat missions and humanitarian mission, ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल कैसे होते हैं ये इसमें क्या होते हैं, 4 फैन लगे होते हैं, ठीक है, पूरा फैन सिस्टम होता है, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे फैन सिस्टम, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें इंजन भी कितने होते हैं, आई थिंक 2 to 3 इंजन होते हैं, ठीक, और एक बड़ी सी बॉडी जैसा ऐसा पूरा एकदम,
and it can lift the heavy heavy mass, heavy things. ठीक है, including like the army jeep, army truck. Okay, and at a single time they, you can say that कि hundreds of personnel also can travel. ठीक है, यहाँ से क्या कर, ये इसको क्या कर सकता है? Okay, fine. Okay, Chinook will be significant in carrying the relief supply also. ठीक है, तो also carrying the relief supply. ठीक है, relief supply. ठीक है, to humanitarian and the disaster relief operations and mass evacuation of refugees. And in the year of 2019, in 2019, the Chinook officially inducted in Air Air Force, Indian Air Force, IA. Clear? So next one is the our next deal actually, and this deal is done with the approx cost of the 7.87 billion euro. ठीक है, 7.87 billion euro, and this deal known as the Rafale deal, and the Rafale deal is done for the 36 Rafale, 36 Rafale, कितना 7.87 बिलियन. ओके, यहाँ पे यूरो कर दो, 7.87 बिलियन यूरो, and for the 36 Rafale aircraft. Okay, and the India has done this deal with the France. ठीक, and now you can say today the Rafale is considered as the best air fighter jet. Okay, in the world. ठीक है, in the world, and actually the Rafale aircraft is having the speed of the 4 Mach. ठीक है, the speed is approx 4 Mach. That means this is the 4 times more than the speed of the sound. Clear? And this is the world best aircraft for the combat, and also has the fire and forget missile. That means it also carry the fire and forget missile. Clear? जो लोग भी क्लास देख रहे हो, मुझे बताओ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द फायर एंड फॉरगेट मिसाइल. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द आवर मिसाइल सिस्टम फायर एंड फॉरगेट मिसाइल. ठीक है, so Rafale has capability to carry the fire and forget missile. Clear? And it's actually the Rafale is a twin jet fighter aircraft. That means ki here is twin engine inbuilt aircraft. ठीक है, fighter aircraft able to operate from both an aircraft carrier and a shore base. ठीक है, so this is the actually twin engine aircraft. Clear? That means the दो इंजन यहाँ पे माउंटेड होंगे, एक अगर फेल करता भी है उसमें दूसरा वाला हमारा काम करेगा. ठीक, and this is able to operate from both the aircraft carrier and the shore base. That means कि it is able to operate from the aircraft carrier. That means INS Vikramaditya. ठीक है, INS Vikramaditya also carry the what? Also carry the Rafale jet. ठीक है, तो आपको पता है अभी कि
we actually the India government signed a deal with the France, ठीक है, for the 36 रफाल, ठीक, और कुछ रफाल के कंसाइनमेंट हमारे तक पहुंच भी चुके हैं, ठीक है, एंड दिस एंड एक्चुअली द armed with the deadly weapons, this is armed with the deadly weapons package, advanced avionics, radar and electronic warfare system to prevent the jamming. That means कि अभी तक की अगर हम बात करें तो राफेल इज़ द बेस्ट कॉम्बैट, ठीक है, एयरक्राफ्ट, और फ्रांस से हमारी डील हुई है, एंड इफ़ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज़ द एक्चुअल, यू कैन से द अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ अ सिंगल राफेल जेट, देन आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत सारा, बहुत उसमें क्या रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है अपोजिशंस के साथ में, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो अप्रॉक्स 1550 करोड़, ठीक है, फॉर अ सिंगल सिंगल राफेल जेट, उन्होंने बात कही है कि हमारा क्या है 1500 अप्रॉक्स 1500 करोड़ की कॉस्ट है, फाइन, फॉर अ सिंगल राफेल जेट, क्लियर, ओके। तो वो थोड़ा सा चीज़ें पॉलिटिकल हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो आप देख लेना, और 2016 में साइन हुआ था, ठीक है, एंड इन 2019 इंडिया रिसीव्ड द फॉर्मली द फर्स्ट राफेल कंसाइनमेंट, एंड द फर्स्ट इज अराइव्ड इन द इंडिया इन द 2020, ठीक है, 19 में उन्होंने फर्स्ट कंसाइनमेंट उन्होंने भेजा, और मतलब भेजना क्या, मतलब कंप्लीट कर लिया, डील कर लिया कि या इट्स ओके, वी आर जस्ट विद ओके विद दिस डील, तो इन द ईयर ऑफ 2020, ठीक है, द फर्स्ट कंसाइनमेंट रीच्ड एट द अम्बाला एयरबेस ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने देखा था ना कहाँ पहुँचा था, अम्बाला एयरबेस, ठीक है, चलो, तो दिस इज द राफेल, वी हैव डिस्कस अबाउट द एयरक्राफ्ट, सॉरी, हेलीकॉप्टर्स, डिस्कस अबाउट द एयरक्राफ्ट, ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग इज हियर, एक्चुअली there is a mission which is done by the India in the year of 2019, and the mission was a sat mission, which is also known as the Shakti mission. Which mission Shakti, ठीक है, तो a sat, this is the anti satellite mission, okay, that means in the year of 2019 India is successfully conducted an anti-satellite missile test. That means now India is capable to destroy a satellites in the lower earth orbit, ठीक है, in the lower earth orbit, and in the 2019 India have do the same, ठीक है, India have did the same, and that mission name is the what, mission Shakti, ठीक है, mission Shakti, and demonstrating the capability to destroy satellite in the lower earth orbit using an anti-satellite missile, with the India become the fourth country apart from the USA, Russia and the China. The first was the USA, then Russia, and then China, clear, so USA, Russia and China, this is the three country, 1, 2 and 3, these are the three country, ठीक है, which have the anti-satellite missiles, but now the India became the fourth country having the anti-satellite mission, okay, और आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिला होगा कि when the India complete their mission Shakti successfully, and we have just destroyed a unused Indian satellites in the lower orbit, तो उस समय अमेरिका ने क्या बोला था कि इंडिया को स्पेस में क्या नहीं करना चाहिए, लिटरिंग नहीं करना चाहिए, ओके, लिटरिंग नहीं करना चाहिए, बोल कौन रहा है पहली बात, ओके, अभी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गार्बेज फैला रखा है वो किसने फैला रखा है, यूएस ने फैला रखा है, क्लियर, और वो इंडिया को बोल रहा है कि आप वहाँ पे गार्बेज मत फैलाइए, ठीक है, तो ये सब
पॉलिटिकल चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उधर से कुछ ना कुछ इधर से चलता रहता है, ठीक। एंड द टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिफेंड इट्स एसेट्स इन आउटर स्पेस। दैट मीन्स कि एक्चुअली अब हम अगर कैपेबल हैं, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय द satellites in the lower orbit, तो एक्चुअली दिस इज शोइंग द कैपेबिलिटी, ठीक है, ऑफ इंडिया टू डिफेंड इट्स सैटेलाइट्स इन द स्पेस। अब हमारे स्पेस में हमारे सैटेलाइट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता, हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। उसके डिफेंस में हम लोग क्या है, एक स्टेप आगे प्लस हो गए हैं। इफ समवन इज टारगेटेड आवर सैटेलाइट्स, देन वी हैव आल्सो द एंटी सैटेलाइट मिसाइल टू डिस्ट्रॉय द satellites in the space. Fine. Okay. The target chosen for the testing ASAT was microsat R. The कौन सा था? The satellite was the microsatellite R. ठीक है। अब क्योंकि ये दिस इज लाइज इन द लोअर ऑर्बिट, तो कोई RSS रहा होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहा होगा, ठीक है। R इज एक्चुअली I think it stands for the resources. Microsatellites are an imaging satellites in an orbit 270 किलोमीटर above the Earth's surface. ठीक है, कितना? 274 किलोमीटर, ठीक है, above from the Earth surface, ठीक है। And it is a kind of what? That was the kind of imaging satellites. So मैं बोला दिस इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, एक्चुअली इमेजेस प्रोवाइड कराता था, ठीक है। चलो, एंड द एंटी सैटेलाइट मिशन यूज्ड वाज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ठीक है, ऑफ इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दैट मीन्स कि जो भी हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का यूज़ किया था इन द मिशन शक्ति, ठीक है, वी आर जस्ट यूज्ड द पृथ्वी सेगमेंट, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, ओके। दैट मीन्स पृथ्वी मिसाइल इज यूज्ड इन द मिशन शक्ति, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि विच मिसाइल इज यूज्ड इन द मिशन शक्ति फॉर द एंटी सैटेलाइट मिशन। So you have just remember that the missile used in the mission Shakti, this is the Prithvi missile. Someone is asked that कि before India any country is here which is having the anti satellites, okay, mission. So here is 3 country: USA, Russia and the China. Which satellite was destroyed by the under the mission Shakti? Then microsat R, when the mission Shakti is done in the year of 2019. Clear? Okay. So, okay, the next one is the which we have to discuss. The next one is the unmanned air vehicle, ठीक है, UAVs, ठीक है। This is the unmanned air vehicle, okay। Actually unmanned air vehicles are those vehicles which is operated automatically, ठीक है, and it can fly and also enter in the enemy territory without any human support. We are just giving the command from the command center or control center, and it can travel, ठीक है, it can travel automatically to the another territory, okay। So unmanned, that means कि there is no man, it's just look like the, in many of the cases this is just look like the aircraft, okay। as aircrafts, these are the look like small aircraft, but today this is also available in several types of the आप कह सकते हो appearance, okay। जैसे कि the appearance like a bird, okay। तो अभी बर्ड जैसा उड़ेगा वो, ठीक है, फ्लाइट करेगा,
तो जो कोई उसको ऑब्जर्व भी करेगा ना तो वो सोचेगा कोई बर्ड्स, ठीक है, इट कैन इजिली स्किप, ठीक है, फ्रॉम द vision of the enemy's eyes. Fine. Okay. So here is, and these actually unmanned aircraft vehicle are also considered as the drones. क्या बोला जाता है इनको? ड्रोन्स. जो ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन्स, ओके, ठीक, ड्रोन्स को क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स. फाइन. So here is the drones which is actually developed by the DRDO. Like the first drone is the Nishant. Nishant. Okay. What is the Nishant? Nishant means peacefully. Okay. That means without making noise. Nishant. So Nishant is a UAV and developed by the DRDO. ठीक है, by DRDO, Defense Research and Development Organizations, DRDO, and this is developed for the Indian Armed Force, for the Indian Armed Force. ओके. और अगर इसके हम बात करें कि हाउ इट लुक्स लाइक, सो दिस इज जस्ट लुक लाइक अ स्मॉल एयरक्राफ्ट लाइक, ओके, and this is using for the intelligence gathering over enemy territory. ठीक है, this is using for the intelligence gathering over enemy territory, over enemy territory, and also for the reconnaissance training surveillance, ठीक है, target destination artillery fire correction, damage assessment, etc. And this is endurance. Endurance is most important thing. So the endurance of the Nishant is the endurance time. That means ki how much longer the it can flight, or you can, it can what, it can be travel. So this is the approx 4.5 hours. Okay, endurance time is 4.5 hours. ठीक है. So it is using for the intelligence gathering over the enemy territory. And apart from this, there is several uses like the reconnaissance. Okay, you can say that in the training, okay, and for the surveillance, and also for the artillery fire corrections. Okay, suppose that the artillery अगर फायर नहीं हो रही है तो ये जाएगा, जा करके उसमें क्या करेगा, उसके करेक्शन, उसमें करेक्शन करेगा इफ़ एनी टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इज देयर, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस, तो वो जा करके उसको क्या करेगा, क्लियर कर देगा. फाइन. सो दिस इज द आर्टिलरी फायर करेक्शन, द डैमेज असेसमेंट, एक्सेट्रा. So this is the Nishant. Nishant is a UAV and developed by the DRDO, Defense Research and Development Organization. Okay. The next one is here. Next one is the Rustam 2. Rustam 2, which is a drone. क्या है, ये ड्रोन है. Before Rustam 2, Rustam 1 is also providing the servicing, ठीक है, providing the services in the Indian Armed Forces, and this is actually medium altitude long endurance. ठीक है, it's a medium altitude long endurance. ओके. अब जब मजाक करने के लिए कोई बोलेगा कि दिस इज अ मेल यूएवी, ठीक है, क्या है ये, मेल यूएवी है, मेल है, फीमेल नहीं. ओके. तो मेल इज हियर एक्चुअली स्टैंड फॉर द मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग, ठीक है,
मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, एयरक्राफ्ट, सॉरी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, एंड विच इज डिजाइंड बाय DRDO, DRDO, ठीक है, डिजाइन बाय द DRDO, and it will replace the Heron UAVs in services with Indian Armed Force, ठीक है. Actually there was a Heron UAV, so the development of the Rustam 2, okay, is actually replaced the Heron UAV, ठीक है. तो हेरॉन को किसने किसने क्या कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया. सो हेरॉन यूएवी इज रिप्लेस्ड बाय द रुस्तम रुस्तम 2, ठीक है, एंड प्राइमरली फॉर द इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड द रिकॉनेसेंस ऑपरेशन, ठीक है. दिस इज फॉर द सर्विलांस, ठीक है, सर्विलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, intelligence and the reconnaissance, okay. So these are the actually the use of the Rustam 2 drone, okay, and it can fly over 22 flight over 22,000 feet, and time is approx 6 hours, ठीक है. कितना टाइम, अप्रॉक्स 6 hours. So Rustam 2 drone is also a unmanned aircraft vehicle which is developed by the DRDO, ठीक है. So these are these defense systems related the topics, and we have discussed about the topics. IT एंड कंप्यूटर्स भी डिस्कस करना है हमें, ठीक है, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करना है. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी डिफेंस जस्ट हमने कंप्लीट किया है, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिफेंस टेक्नोलॉजी वी हैव टू बी जस्ट मूव द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो थोड़ा सा इनका जो कनेक्शन है ना वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा. क्लियर. चलो, तो थोड़ा सा वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, okay. Okay, and nuclear technology, if we are just talking about the nuclear technology, then we will find that what is the nuclear and what is the technology. You guys know very well the technology, that means you can say एक ऐसा मतलब काम करने का तरीका, ओके, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे, ठीक है, types of the what any types of the materials, ठीक है, utilization of any types of the processes, ठीक है, materials, processes, whatever you can say, you can consider टेक्नोलॉजी. प्रोसेस, उस पद्धति को यूज करके टेक्नोलॉजी की बात की जाती है. क्लियर. तो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी व्हेन वी आर टॉकिंग, देन दिस इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस पढ़ा है कहीं? देखो, सेल के न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है. मुझे पता है कि हमारे साथ हमने डिस्कस किया था द सेल चैप्टर में वी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस, बट हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स, ठीक है, न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स. चलो, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पर चलेंगे, ठीक है. तो एटम, अच्छा देखो, स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जब हमें नीड होगी हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ठीक है. तो अभी ये भी समझ सकते हो आप कि हम केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. चलो, एटम्स, व्हाट आर द एटम्स? एटम्स आर एक्चुअली व्हाट, द स्मॉलेस्ट
particle in the universe, okay, and which is in अनडिवाइडेबल इन नेचर. लेकिन अभी एटम को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है. And the atoms are actually responsible to take the participation in any chemical reactions. Okay, that means for any chemical reactions, the single atom is responsible. ठीक है, चलो देखो, this is the atoms. चलो बात करते हैं atoms. Suppose that here is atoms, okay, and at the center of atoms the nucleus is present. The nucleus is present, and in any atoms there is mainly three fundamental particles are available. Three fundamental particles, okay, and which is known as the electron, proton and neutron. Okay, electron, proton and neutron, these are the three fundamental particles. Okay, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, फोटॉन. Okay, positron, neutrino, photons, these are also particles. Okay, sub particles. Clear? So these are the basic three fundamental particles. ठीक है. In any atoms there is actually nucleus is here. The nucleus is always positive in nature. Nucleus is always positive in nature. Why? Because the nucleus is made up of proton plus neutron. Okay, the nucleus is made up of proton plus neutron. ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन क्या करेंगे ना कि स्मॉल में ही लिखेंगे तो जिससे समझ में आए. ठीक है, दिस इज द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ठीक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर एक्चुअली making the nucleus or nucleus part of the atom. Clear? Around the nucleus, ठीक है, around the nucleus the electrons are the traveling and the electrons are actually traveling a imaginary circular path which is known as the orbits. The electron is having the negative charge, okay, and proton is having the positive charge. Neutron is neutral, that means there is no charge. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रोटेटिंग एट द अराउंड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. चलो, इतनी बात समझ में आई. और इस तरीके से कंसिस्ट करता है एक एटम. ठीक है, इतना क्लियर. नाउ द एटम्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, एंड जब व्हेन द टू एटम्स आर फ्यूज्ड they are forming the molecule. Then molecules are fused and formation of, they form the element. Okay, they form the element, and the definite ratio of the elements are available, so this is called the compound. Suppose that O is atom of oxygen, O2 is the what, molecule of the oxygen, and these O2, when suppose as 6 CO2, 10 O2,
6O2, 10O2. Okay, so this is the element. This is the element, and when the O2 is combined with the carbon dioxide and two molecules of oxygen, forming the compound which is known as the carbon dioxide, which is known as the carbon dioxide. Okay, so this is the atom. इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर है. Okay, now we have to just discuss about the some specific types of the elements which having a special property. ठीक है, इनके पास क्या होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होता है. These atoms are considered, these elements are considered as the as the radioactive elements. Okay, these elements are considered as the radioactive elements, and the property of the elements is considered as the radioactivity. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी. ओके, दैट मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ओके, the radioactive elements are defined as the those elements, ठीक है, which having the radioactivity property. Okay, what is the radioactive property? That means emission of radioactive radiations. Okay, and the radiations are alpha, beta and gamma. Okay, so alpha, beta, gamma, these are the radioactive radiation. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि these are the radioactive in nature. The elements are the radioactive nature. That means they are emitted the alpha, beta, gamma types of the radioactive radiations. Clear? So if they are emitted the radioactive radiations, or you can say emitted the radiations, so that means it also releases the energy. The use of that energy is considered as the nuclear energy. ठीक है, the energy is considered as the nuclear energy. Okay, and the use of that energy by using that technology is considered as the nuclear technology. Okay, chalo. Acha, one more thing is here. Suppose that if we have a element, and element name is the carbon. Which element? Carbon. So each and everything मत बोलो, most of the things आप कह सकते हो are made up of the carbon. Okay, जैसे अगर we are just talking about the wood. Okay, so this is also carbon containing. ठीक है, if we are just talking about the plastic, so it is also carbon containing. Okay, due to the transitional ability of the carbon atom, the organic compounds are very much in numbers found in the nature. ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, संख्या में पाए जाते हैं कार्बन कंपाउंड. क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशनल नेचर ऑफ द कार्बन. ठीक है, it can quickly react with another metals, another compound. ठीक है, but the question is that here is carbon, so and we are just talking that carbon has the ability of the radioactivity, so the carbon is radioactive. That means it can emit the alpha, beta, gamma. अब किसी में से अल्फा बीटा गामा निकल रहा है तो आफ्टर सम टाइम्स इट गेट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्राइमरी एग्जिस्टेंस था, क्लियर, तो प्राइमरी एग्जिस्टेंस गेट डिस्टर्ब. ठीक है, क्योंकि उसमें से अल्फा बीटा गामा निकलेगा.
but the carbon, normal carbon, are not producing this nature. ठीक है? Actually, not only carbon, the normal atoms are not radioactive in nature. As it is in nature. Actually, when we are just talking about the radioactivity of the element, so here is one concept is here. The isotopes of the atoms are the isotopes of the atoms may be radioactive in nature. So what are the isotopes? चलो उस पर बात कर लेते हैं. ओके, अभी हमने यहाँ पे देखा कि देयर इज व्हाट, देयर इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग about a element, then suppose that here is x element x, कोई एलिमेंट हो सकता है. ठीक है. हियर इज, जब भी आप कभी देखोगे, जैसे सपोज दैट कि ऑक्सीजन देखते हो, तो हियर इज ऑक्सीजन डिनोटिंग द 8 16. ओके, so here is n and here is m. Fine. The lower digit of the symbol of any element is showing the atomic number n. Okay, and the upper digit of an element is showing the mass number m. ठीक है, mass number. So what is the atomic number and what is the mass number? Actually, the mass of the atom is exist in the nucleus of the atom. ठीक है. That means the mass of the nucleus of an atom is showing the mass of that particular atom. ठीक है, mass of that particular atom. जैसे suppose that if here is sodium, it's a 11 23. So this 23 is actually mass number, and this is the mass of atom. Clear? And also this is the mass of nucleus. Okay, and we know that the nucleus is containing the proton plus neutron. ठीक है, proton plus neutron. That means कि the mass of proton and neutron is considered as the mass of nucleus. ठीक है. So here is mass number is m and atomic number is n. Now the atomic number is denoting the number of electron. That means how much electron is present in an atom. ठीक है. So this is denoted by the atomic number. चलो, one more thing is here. If the element is neutral in nature, ठीक है, neutral means that means there is no any positive, no any negative charge on the atom. So the atom will consider as the neutral atom. ठीक है, atom will consider as a neutral atom. And why this is neutral? Because the number of proton is equal to the number of electron. That means the number of proton and electron is equal. ठीक है. क्यों इक्वल होगा? Because we know that electron is having the positive negative charge and the proton having the positive charge. So that means जब प्लस माइनस इक्वल होगा तभी उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? न्यूट्रल चार्ज होगा. If the plus is increases, so there is a positive charge. That means if the proton numbers is increases, there is a positive charge. Is there an increment in the neutrons numbers of neutrons, so it is showing the negative charge. ठीक है, negative charge. चलो, if we are just denoting that the E is what is the mass number. Okay, so is equal to P plus
एन, ठीक है, इज इक्वल टू पी प्लस एन, एंड जेड, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक, हियर इज ई, हियर इज जेड, ठीक है, तो जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जेड बराबर ई बराबर पी, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ओके, वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, ठीक है, ठीक है, ये बात आई समझ में, ओके, सो this is the atomic number and this is the mass number. Mass number is p plus n, atomic number is the number of electron, and number of electron is always equal to the number of proton, ठीक है, चलो, now the next one is the what, isotopes, क्या होते हैं आइसोटोप, आइसोटोप, ठीक है, isotopes are those atoms, ठीक है, which atomic number is same but atomic weight is different, ध्यान से सुनना, atomic number is same but atomic weight, or you can say the mass number is different, that means isotopes are same atomic number and differ mass number, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफर मास नंबर, दैट मीन्स बात करें तो क्या होगा, सपोज हियर इज द एटम इज एक्स, एटम इज वाई, so here is 2n, 2n, a and b, that means 2 and 2n are same, that means same atomic number and the mass number is different, there is mass number a but there is mass number b, ठीक है, so when the atomic number is same and the mass number are different, so the atom is considered as the isotopes, ठीक है, here is the best examples of the isotopes, ठीक है, the isotopes of the carbon, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखें, जैसे एग्जाम्पल इज हियर लाइक कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, that means here the 6 is what, 6 is the atomic number and the atomic number is same, so here all the three atomic numbers are same but these are the mass number and these are the different, here is the mass number 12, here is 13 and here is 14, okay, so these are the isotopes of the carbon, okay, like this the isotopes of hydrogen 1h1, 1h2 and 1h3, clear, 1h1, 1h2 and 1h3, here is हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड द ट्राइटियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, so this is the isotopes of what, hydrogen, isotopes of hydrogen, clear, okay, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, लाइक यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 233, यूरेनियम 92 238, clear, so here the isotopes of the uranium, okay, which atomic number is same 92, 92 and 92 but the atomic mass are the different 35, 33, 38, clear, so these are the isotopes, okay, now the radioactive isotopes are what, the radioactive isotopes are considered as the isotopes having the radioactive property
is considered as the radioactive isotopes, like uranium 235. Like uranium 235. Uranium 235 is a radioactive isotope. Clear? And here is, in the case of carbon, the carbon 14 is the what? The carbon 14 is the radioactive isotope. ठीक है? So there is several examples of the radioactive isotope. इतनी बात क्लियर हुई? चलो अभी आगे बात करते हैं. ठीक है? Okay. These isotopes having the several applications actually. ठीक है? इन आइसोटोप्स के बहुत सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं. लाइक these isotopes, these radioactive isotopes are radioactive isotopes. Okay. These radioactive isotopes are using in for the different, for the several purposes, like for the energy production, especially for the energy production, and for the medical treatment, for the medical treatment. ठीक है? Energy production, how it is useful in the energy production. कैसे? Actually, for the energy production, there is two types of the reactions occurs. ठीक है? And the reactions is carried out by the radioactive isotopes. ठीक है? The reactions are, the first one is the nuclear fission, and second one is the nuclear fusion. ठीक है? Nuclear fission and the nuclear fusion. Nuclear fission, that means there is a breakdown. Fission means breakdown. That means a larger atom, okay, a larger atom is breakdown in smaller atom, or you also can say that the larger nucleus, ठीक है, is breakdown into the smaller nucleus. ठीक है? So this process is considered as the nuclear fission process. When the larger nucleus is get breakdown, ठीक है, so it is converted into the two or more smaller nuclear atoms, ठीक, or nucleus. So it will release the energy actually, ठीक है, and high amount of energy. That means if you are just talking about the breakdown of a nucleus of the uranium, ठीक है, so then we will find that each and every reactions, ठीक है, is producing the more than 200 MeV energy. ठीक है? कितना? मोर देन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है? आओ देखो बात करते हैं यहाँ पे. देयर इज एग्जाम्पल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ठीक, वी आर जस्ट टेकिंग द यूरेनियम 92 235. ठीक है? दिस इज द आइसोटोपिक यूरेनियम. ठीक, एंड बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन. Okay, when the neutron is bombarding at the nucleus of the uranium 92 235, the uranium in get fissile and converted into the beryllium 56 141 plus krypton 36 92. Okay, plus 2 1 3 plus 3 0 and 1 3
0 n1 ऐसा लिख रहे हैं, +3 0 n1, ठीक है, एंड +200 MeV energy. Okay, this is the nuclear fission reaction. Here is uranium 92 235, ठीक है, and the neutron bombarding is done, ठीक है, over the uranium 235. The uranium 235 is now converted into the beryllium 56 141 and the krypton 3692, and the three molecules of the neutron is also generated, ठीक है, and which is resulting the 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है. दैट मीन्स अभी इसको आप इक्वल भी कर सकते हो बैलेंस डायरेक्शन देखने के लिए. 141 प्लस 92 9 एंड 14 प्लस 9 13, तो इट्स 230 and 2 plus 3 233. So here is 235 plus 1 236, so 233, and here is 3 neutron, that means ki 3 236. Okay, the 56 and there is the 36, that means ki 6 6 12 5 3 8 8 plus 1 9 9 2 92, yes 92, and there is 0, that means ki 0 is 0, ठीक है. तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक, तो दिस इज द 0. Okay, okay, and it is releases the 200 mega electron volt energy, ठीक. Actually this process is also carried out by the using of the nuclear reactor, ठीक है. This process is also done in case of the atomic bomb, ठीक है. एटॉमिक बॉम्ब में यही प्रोसेस होती है, ठीक है. कौन सी प्रोसेस होती है? फिजन वाली प्रोसेस होती है, ठीक. न्यूक्लियर फिजन, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इज द एटॉमिक बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स. न्यूक्लियर रिएक्टर, actually the atomic bomb is the uncontrolled chain reaction. Okay, this is the uncontrolled chain reaction, and the nuclear reactor is the control chain reaction. That means अब इधर देखो, इधर समझो इस प्रोसेस में यहाँ पे हमने सिंगल न्यूट्रॉन यूज किया, फाइन, ओके, एंड हियर इज प्रोड्यूसिंग द 3 न्यूट्रॉन, and they are producing 3 neutrons are very in high speed, ठीक है, are in very high speed. और जब ये हाई स्पीड में होंगे तो ये और तेजी से जाके क्या करेंगे? न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करेंगे. तो इट इज स्टार्टिंग एनर्जी एंड दिस प्रोसेस हैपन इन द न्यूक्लियर बॉम्ब. और इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब इतना क्या होता है? डिजास्टरस होता है, फाइन, ओके. व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है. तो देयर इज व्हाट? देयर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रॉन. तो एट अ टाइम अ सिंगल न्यूट्रॉन इज अलाउड टू ब्रेक डाउन, ठीक है, एंड अनदर न्यूट्रॉन इज गेट सोक्ड बाय द सम एब्जॉर्बर या सम एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स, ठीक है. बात करेंगे अभी न्यूक्लियर रिएक्टर की, उसमें बताएंगे कि विच एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स आर यूजिंग फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूक्लियस, ठीक है. चलो, तो इससे क्या होगा कि चेन कैसी होगी? कंट्रोल्ड होगी, एंड बाय दिस, बाय यूजिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है. जैसे हमारे जो भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लाइक द नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल, ओके, डीजल, और यू कैन से नेचुरल गैसेस, ओके. जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे पास एनर्जी के सोर्स के लिए दिस
न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अवेलेबल, ठीक है, तो वहाँ से भी एनर्जी प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक। एंड आगे आने वाले टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी पे डिपेंडेंटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ द यूरेनियम कैन प्रोवाइड एनर्जी ऑफ दैट अमाउंट, कि आप इतना समझो कि एक टाउन को 1 मंथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है ये, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम। चल so this is the nuclear fission reaction। अच्छा, इन एटॉमिक बम व्हाट शुड हैपन? इन एटॉमिक बम ये सेम रिएक्शन होती है, ठीक है, बट दिस इज द अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक। एंड अनकंट्रोल्ड होगी तो दिस इज द मोर डिजास्टर्स कंपैरेटिवली कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एटॉमिक रिएक्टर्स क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द हायर एनर्जी प्रोडक्शन, द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, ठीक है, एंड विच इज रिजल्टिंग द बस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर, ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड वन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, तो रफ करता हूं मैं। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूज़ अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर लिया भाई। उसने अपना ऑफिशियल क्या दिया, स्टेटमेंट दिया कि हमने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कर लिया है तैयार। छोटा सा पिद्दी सा कंट्री, इतना बड़ा सा, है ना, सबकी नाक में दम कर रखता है, ठीक है। थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहा करो, तो मैं क्लास में आया करो तो थोड़ा मुझे बता दिया करो एक दो न्यूज़ कमेंट में, मज़ा आ जाए फिर मुझे भी कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, सॉरी, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। द न्यूक्लियर फ्यूज़न आर द रिएक्शन इन विच द टू nucleus or atoms get fused and they form a greater nucleus or atom या larger nucleus or atom। Suppose that there is one H2 plus one H3, okay, and they are fused together and forming the 2He4 plus 0 and 1 and plus एनर्जी इनफाइनाइट, ठीक है। कैसी एनर्जी? इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है। दिस इज द, हिंदी में लिखने वाला था मैं, दिस इज द ड्यूटेरियम, दिस वन इज द ट्राइटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। These are the what? These are the isotopes of the hydrogen, ठीक है, deuterium and tritium। They fused together and they formed the helium atom, which is larger nucleus, ठीक है। This helium atom, this is the larger nucleus, and the release of the neutron, and it is producing the infinite energy। कितनी एनर्जी निकलती है? इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, ओके। एंड दिस इज एक्चुअली uncontrolled in nature, okay। If we are just talking about that there is hydrogen fusion, okay, so in our atmosphere the hydrogens isotopes are present in every form, and if we are just performing the nuclear fusion reaction, hydrogen nuclear fusion reaction in
an open environment, so it is resulting the rapid fusion of the environmental hydrogen. ओके, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस है ना, वापस में क्या होंगे, रिएक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, और लीडिंग द इट विल लीडिंग द मोर डिजास्टर्स बॉम्ब कंपेरेटिवली एटॉमिक बॉम्ब. ठीक है, तो फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ भी हाइड्रोजन होगा वहाँ रिएक्शन होकर के थिंग्स, यू कैन से, द हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल गेट बस्ट, इंक्लूडिंग द creatures, including the living organism, including the human beings also. ठीक है, तो ब्लास्ट होने लगेगा हर जगह अगर उसको हम क्या कर दें, बिल्कुल ओपन रिएक्शन करा दें. किसका? दिस न्यूक्लियर फ्यूजन का. ओके, एक्चुअली द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, so this nuclear fusion is the actually source of solar energy. सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी पे बड़ा डिस्प्यूट रहा है ना, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट था. अब बताया ये नहीं वो नहीं वो, एंड आफ्टर दैट बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला कि एक्चुअली द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी. ठीक है, एंड द बेस्ट एग्जांपल of the nuclear fusion is the solar energy, source of solar energy, and after that the hydrogen bomb, the hydrogen bomb. ठीक है, साउथ कोरिया हैव टेस्टेड द हाइड्रोजन बॉम्ब, अभी न्यूज़ में दिया था कुछ महीने पहले. ठीक है, सॉरी, नॉर्थ कोरिया, नॉट साउथ कोरिया. नॉर्थ कोरिया हैव टेस्टेड द हाइड्रोजन बम. साउथ कोरिया तो फिर भी बहुत शांत सा देश है, एकदम पीसफुल कंट्री है. ओके, साउथ कोरिया, बट नॉर्थ कोरिया क्या है, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है. आपने देखा होगा कि दुनिया भर के क्या मतलब उल्टे सीधे काम करता रहता है वहाँ का जो प्रेसिडेंट, जो कह लो रिप्रेजेंटेटिव है, किम जोंग उन, है ना. छोटे से देश का छोटा सा प्राणी जब परेशान करके रखा है पूरी दुनिया को, राइट. ओके, सो ही क्लेम दैट द नॉर्थ कोरिया हैव टेस्टेड द हाइड्रोजन बॉम्ब. ठीक है, ऐसा किया होगा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया होगा हाइड्रोजन बम को टेस्ट. ठीक है, चलो, तो दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. इन आवर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिजन, स्पेशली न्यूक्लियर फिजन. ओके, ठीक, एंड इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट द nuclear reactor. That means we have to carry out the fission reactions in the reactor in a controlled manner. ठीक है, किस मैनर में? कंट्रोल्ड मैनर में हम बात करेंगे इसकी, न्यूक्लियर फिजन की. ठीक है, बहुत सारा अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आपने सुना था, आई थिंक कि द ईयर ऑफ द 2016 आई थिंक, देयर वाज अ व्हाट, देयर वाज अ फुकुशिमा ट्रेजेडी. ओके, द टू न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द जापान गेट बस्ट, ब्लास्ट कर गया था वो, है ना. बहुत सारी रेडिएशंस क्या हो गई थी, स्प्रेड आउट हो गई थी. एक तो जापान पहले से ही क्या है ना कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इन चीज़ों से. एंड भाई जापान सफ़र क्यों क्यों कर रहा है, और आप सब जानते हो कि इन द ईयर ऑफ 1945, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, एट द 6 एंड 9 sequentially the Hiroshima and Nagasaki, okay, have faced the blast of an atomic bomb. ठीक है, लिटिल मैन एंड फैट बॉय, है ना, समथिंग ऐसा कुछ एटॉमिक बम का नाम था. एंड हु डिड द एटॉमिक अटैक एट द हिरोशिमा एंड नागासाकी? यूएसए. ठीक है, यूएसए अटैक्ड ऑन, एंड आफ्टर दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गेट स्टॉप्ड. ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड को डिक्लेयर भी स्टॉप डिक्लेयर कर दिया गया बाय द ईयर ऑफ 1945. सो व्हेन द एनी टाइप ऑफ द बस्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, यू कैन से एनी एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, so its result is very disastrous actually, because of the spread out of the many types of the radiations. Okay, it is leading the so many types of abnormality in the living organism. Okay,
दैट मीन्स हमने हमने बात किया था, बायोटेक्नोलॉजी में भी बात किया था कि द रेडिएशन इज ऑल्सो अ रीजन फॉर द म्यूटेशन. ओके, दैट मीन्स द रेडिएशन इज लीडिंग द म्यूटेशन इन द जीन. ओके, तो म्यूटेशन अगर वो लीड कर रहा है जीन में, तो द म्यूटेशन इन द जीन इज प्रोड्यूसिंग द सेवरल टाइप्स ऑफ द एबनॉर्मेलिटी. ओके, तो आप देख सकते हो कि द हैंडलिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस इज वेरी कंसर्न पॉइंट एक्चुअली. ठीक है, और कहीं भी अगर ये किसी भी तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को, गाइडलाइंस को, एसओपीज़ को फॉलो करते हुए किया जाता है. ठीक है, और अभी जब हम कल बात करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट द पावर स्टेशंस. ठीक है, तो पावर स्टेशंस के बनने के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. ठीक, तो उनको हम बात करते हुए चलेंगे. ठीक, कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू इस्टेब्लिश अ न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन एनी सिटी. अभी देखा था ना, साउथ में, तमिलनाडु में क्या हो रहा था, उसको कुंडन कुलम के लिए क्या किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था. वहाँ पे उसको इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं बोला जा रहा था, है ना. तो दीज एक्चुअली बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. एंड ड्यू टू द रेडिएशन द स्ट्राइक वाज गोइंग ऑन. ठीक, रेडिएशन के चक्कर में सारा स्ट्राइक हो रहा था. लेकिन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिनाइडेड द प्ली अगेंस्ट ऑफ दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज एक रेडिएशन के कंसर्न को लेकर के चीज़ें नहीं इस्टेब्लिश की गई, लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत होता है. ठीक है, रेडिएशन तो एक उसका डीमेरिट है ही, लेकिन अगर सही से करेंगे तो हैंडल कर सकते हैं. हम हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे पावर स्टेशन हम हैंडल कर रहे हैं. ठीक है, तो फॉर द टुडे सेशन दिस इज़ इनफ, और वी हैव एक्चुअली जस्ट कंप्लीट आवर डिफेंस टेक्नोलॉजी, and this is the just introduction of the nuclear technology. So in further class we will comprehensively discuss about the nuclear technology. ठीक है, उस पर बात करें.